Friends, today we will be discussing about the possible questions which are usually asked in the DRA examination conducted by IIBF. Again, I will request all of you to go through the entire content of the chapter and prepare yourself for all possible questions. बंधुगण आमे वर्तमान चैप्टर नंबर 3 जोटा कि विभिन्न प्रकार जमा स्कीम बा जमा योजना विषय रे आलोचना करिबा से चैप्टर रो संभावित प्रश्न किछि ता विषय रे आमे आलोचना करिबा मु आउ थरे समस्त को अनुरोध करिबी जे समस्ते पूरा अध्याय पढ़िबे एवं सेथरु को प्रकार जे कोनसे प्रकार प्रश्न आसले निजे जेमति उत्तर करिया पे सक्षम होई परिबे. So we will start from the chapter various deposit schemes and other schemes or other services. Different schemes are demand deposits and time deposits. Different deposit schemes are demand deposits and time deposits. Demand deposits, a question may come, what is a demand deposit? A deposit which is payable on demand. A deposit which is payable on demand is called a demand deposit. For example, savings bank and current account mainly. दाबी जमा काहू कहती दाबी जमा जो जमार जमा आम दाबी कले आमको मिले सेटा को दाबी जमा कहते. उदाहरण स्वरूप संचय जमा खाता आउ चलंती खाता. Now we'll consider the questions which may come as regards current accounts. आमे वर्तमान आलोचना करिबा चलंती खाता खाता बा चालू खाता संबंध रे कोन प्रकार प्रश्न आसी पारे. In which account bank do not pay any interest? Answer is current account. केउ जमा खाता रे बैंक कोनोसी सुध मिले ना दिए नाही बा केउ जमा खाता रे ग्राहक को कोनोसी सुध मिले नाही. आंसर होची चलंती खाता चलंती जमा खाता बा चलंती खाता बा चालू खाता. In which account overdraft facility is given by the bank? क्यों जमा खाता रे ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध थाए. आंसर इज करंट अकाउंट. उत्तर होची चालू खाता बा जमा खाता. In current accounts, usually transactions are done by check only. In current accounts, usually transactions are done by check. चलंती खाता बा चलंती जमा खाता बा चालू खाता रे समस्त उठाण चेक माध्यम रे होई थाए. साधारणतः समस्त उठाण चेक माध्यम रे होई थाए. Now coming to current savings bank accounts, संचय जमा खाता. As regards savings bank accounts, some questions may be asked such as what are the restrictions on savings bank transactions? The answer is number of withdrawals per quarter and amount of withdrawal through ATM in one occasion. संचय जमा खाता रे केउ प्रकार प्रतिबंध लगी थाए. संचय जमा खाता रे गोटिए त्रैमासिक केतोटी उठाण करी हबो एवं एटीएम माध्यम रे केते टंका उठे हबो एकाथर के केते टंका उठे हबो सेहितिर प्रतिबंध थाए.
सेविंग्स बैंक अकाउंट रे सुध केमती मिले केते दिन रे मिले साधारणतः सुध त्रैमासिक मिलता है साधारणतः इन सेविंग्स बैंक अकाउंट्स at what interval interests are paid. Usually in savings bank account interests are paid at quarterly intervals. In savings bank accounts, how the interest is calculated? In savings bank accounts, interest is calculated on daily balance or daily closing balance. संचय जमा खाता रे सुध केउ प्रकार हिसाब होता है संचय जमा खाता रे सुध दैनिक माने बैलेंस बा जति टंका थाए ता उपरे बा दैनिक जो क्लोजिंग से दिनर शेष रे जो बैलेंस थाए ता उपरे हिसाब होता है एगुडा गला प्राय सेविंग्स बैंक और करंट अकाउंट बाबद रे Now, coming to fixed deposits or term deposits. Term deposits are broadly classified into two parts. One is term deposit and another is RD or recurring deposit. अवधि जमा बा ब्याज जमा मुख्यतः दुई प्रकार गोटे हला ब्याज जमा आ गोटे होची पौनपौनिक जमा बा रिकरिंग डिपोजिट ब्याज जमा दु प्रकार गोटे सुध मिले त्रैमासिक सुध मिले आ गोटे समूल सुध शेष अवधि शेष मिले इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ टर्म डिपॉजिट्स अगेन वन इज नॉर्मल टर्म डिपॉजिट in which the depositor gets interest usually at quarterly intervals and there is another type of deposit term deposit that is called cumulative deposit in which the depositor gets matured amount at the end of the term. What are the three things those are constant in a term deposit? In a term deposit, amount deposited, interest rate and term, these three things are constant or these three things are specified at the time of taking the deposit or depositing the amount. अवधि जमा रे तीनोटी जिनस स्थिर थाए जमा राशि सुधर हार एवं अवधि in recurring deposits what are the four things there are four things which are constant पौनपौनिक जमा रे चारिटी जिनस स्थिर थाए जमा राशि अंतराल शुद्ध हार एवं अवधि the difference between fixed deposit and current account RD is that a fixed amount is usually deposited at an interval for a specified period whereas in fixed deposit the amount is deposited once in one go मियाद जमा एवं पौनपौनिक जमा भितर तारतम्य मियाद जमा रे एकाथरे गोटे राशि जमा करा जाए पौनपौनिक जमा रे निर्दिष्ट राशि निर्दिष्ट अंतराल रे निर्दिष्ट सुधार रे निर्दिष्ट अवधि पई जमा होता है these are regarding in current accounts again we'll come back to current accounts in which account there is no restriction on deposit or withdrawal that is current account what is the specialty of BSBDA
or what is BSBDA? BSBDA is Basic Savings Bank Deposit Account. In BSBDA, there is no requirement of any minimum balance. BSBDA, Basic Savings Bank, Basic मूल संचय जमा खाता यही खाता रे कौन सी प्रकार मिनिमम बैलेंस रो रेस्ट्रिक्शन न था in fixed deposits another question may come. What is the minimum time or minimum period for which a fixed deposit can be done? Minimum period for a fixed deposit is 7 days or a term deposit is 7 days. What is the maximum period of a term deposit? It is 120 months, that is 10 years. मियाद जमा अति कम रे केते दिन पई हे परिबो मियाद जमा अति कम रे 7 दिन पई हे परिबो अति बेसी रे 120 मास बा 10 वर्ष पई हे परिबो recurring deposit or RD account can also be made for maximum period of 120 months or 10 years. The fixed deposit can be the fixed deposits which are done up to 7 months, 7 days to 6 months are called short-term deposits. Please remember the fixed deposits or term deposits which are done for the period 7 days to up to 6 months is called short-term deposit. जो मियाद जमा बा स्थायी जमा बा फिक्स्ड डिपोजिट 7 दिन रु 6 मास पर्यंत होता है ताकू स्वल्प अवधि जमा बा स्वल्प मियाद जमा कहा जाए. An RD account can be opened for minimum 12 months. Usually it is for minimum 12 months. पौनपनिक जमा अति कम रे प्राय 12 मास पई ग्रहण करा जाय थाए. There is another type of deposit which is called flexi deposit or hybrid deposit. In the flexi deposit, banks do not issue any fixed deposit receipt. In the fixed deposit, banks do not issue any fixed deposit receipt. Flexi deposit बा हाइब्रिड डिपोजिट रे बैंक कोनोसी जमा रसीद दिए नाही किंतु the advantages of flexi deposit are customer need not come to the bank to make the fixed deposits. He gives only a mandate and the customer gets higher interest rate. फिक्स्ड डिपोजिट बा हाइब्रिड जमा योजना रे ग्राहकों को मुख्यतः दुई प्रकार सुविधा मिलता है. बारंबार से माने बैंक को जमा करिया पे आसिया को पड़े नाही बा उठाण करिया पे भी आसिया को पड़े नाही आ से माने अधिक सुध पाई थांती. गोटे खाली बैंक रे लेखि दे दियंती हमर एतिकी टंका जमा हले तापरे आपण फिक्स्ड डिपोजिट कर दियंतु बैंक ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सेटा बाहर करके संचय जमा खाता बाहर करी स्थायी जमा खाता बा मियाद जमा रखिदेव जहाँ द्वारा ग्राहकों को बेसी सुध मिलता है. मियाद जमा सुध मिलता है. Another question which comes, a fixed deposit or a term deposit receipt is not permitted for what? A fixed deposit receipt cannot be what? It is not transferable from one person to another person. स्थायी जमा खाता स्थायी जमा रसीद बा मियाद जमा रसीद कौन करा जाई पारिबो नाही. मियाद जमा रसीद
जनक ठारू आउ जनकु हस्तांतरण करा जाई परिबो नाही अर्थात जदि मो नारे जमा खाता अछि बा जमा रसीद अछि केवल से टंका मते ही मिलिबो मु आउ काहु देले से पाई परिबे नाही कारण the reason is fixed deposit receipt is not a negotiable instrument कारण जमा रसीद से ताहा एक केवल रसीद ताहा गोटिए negotiable instrument नुह another question which may come if a bank goes into liquidation what is the maximum amount a depositor will get the depositor can get 5 lakh or the deposited amount whichever is less जदि कौन सी बैंक दिवालिया हो जाए से परिस्थिति रे ग्राहकों को केते टंका मिलिबो बैंक दिवालिया होबा परिस्थिति रे ग्राहकों को 5 लाख टंका बा तांकर द्वारा जमा करा जाइथिबा राशि जोटा कम सेटा मिलिबो who pays this amount is paid by DICGC एही टंका किए दिए एही टंका DICGC बोली संस्था अछि से संस्था दिए DICGC रो पूरा what is the full form of DICGC DICGC full form is Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. Now we'll consider remittances. Remittances बा अंतरण गोटिए शाखा बा गोटिए शाखा टंका पठे First type is demand draft. Demand draft अति बेसी रे केते टंका काउंटर रे जमा करी ड्राफ्ट करा जाय परिबो अति बेसी रे 50,000 टंका रु कम पर्यंत काउंटर रे टंका जमा करी ड्राफ्ट नहीं हबो What is the maximum amount that can be deposited to get a demand draft by depositing cash at the counter by depositing cash a demand draft can be obtained for below 50,000 another question may come what is the maximum amount that can be paid across the counter against a demand draft the answer is maximum 20,000 can be paid across the counter against a demand draft गोटिए ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट प्रति बदल रे काउंटर रे केते टंका नगद आकार रे उठे हबो नगद आकार रे 20,000 टंका अति बेसी रे 20,000 टंका उठे हबो आंसर 20,000 nowadays more emphasis is given for electronic funds transfer what is the mode by which international remittances are done international remittances are done through SWIFT SWIFT stands for the Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication अंतरराष्ट्रीय कार टंका प्रेरण कहा माध्यम रे होई थाए अंतरराष्ट्रीय अर्थ कारबार अर्थ प्रेरण स्विफ्ट माध्यम रे होई थाए in our country the transactions are done by electronic mode by way of RTGS and NEFT what is RTGS RTGS is real time gross transfer real time gross settlement RTGS
real time gross settlement means the amount gets credited to the recipient's account on real time basis. Real time gross settlement, RTGS. What are the benefits of real time gross settlement or RTGS? Draft is sent from the same bank, one branch to another branch, whereas in case of RTGS, the amount can be sent from one branch to another branch also. And the benefit is it has a quicker settlement. Within very short time, it gets settled through RBI. Through which the settlement takes place? The settlement between two banks takes place through RBI or Reserve Bank of India. So RTGS has mainly three benefits. First is speed. Within seconds, it is deposited to the recipient's account. It has wider boundaries and it has quicker settlement cycle at RBI. RTGS रो सुविधा कौन? RTGS रो सुविधा हला तुरंत टंका जाइके जमा हो जाए. वाइडर बाउंड्री गोटे शाखा रो गोटे बैंक रो गोटे शाखा रो आउटे बैंक रो आउटे शाखा की अन्य शाखा को भी टंका पड़े जाई पारे एवं आरबीआई बा रिजर्व भारतीय रिजर्व बैंक माध्यम रे शीघ्र सेटलमेंट हो जाए. Another question which may come, which need not be mentioned on the application, RTGS application. On the RTGS application, sender's account number need not be mentioned because it is issued against the check of the account holder. RTGS रे कौन RTGS आवेदन पत्र रे कौन देवा आवश्यक नहीं? जो लोक प्रेरकंकर अकाउंट नंबर देवा आवश्यक नहीं कारण तांको अकाउंट रो ही टंका ट्रांसफर हेकरी जे पाइबे तांको पाखु टंकाटा जाए. Now coming to NEFT. NEFT is National Electronic Funds Transfer. National Electronic Funds Transfer. Unlike RTGS, the settlement in case of NEFT takes place in batches at RBI. NEFT रे RTGS रे संगे संगे सेटलमेंट हो जाए RBI रे किंतु NEFT रे प्रत्येक 15 मिनिट बा 30 मिनिट रे गोटे गोटे बैच RBI छाड़े आउ सेथरे सेटलमेंट. Within what time the amount can be credited to the recipient account in the case of NEFT? The upper limit is 24 hours. NEFT रे अति बेसी रे केते समय भितरे टंका था जे प्राप्य जहाँ को प्राप्य तांको अकाउंट रे जमा हो. जे जहाँ अकाउंट रे टंका जमा होबा कथा तांको अकाउंट रे 24 घंटा मध्य रे टंका जमा होबा बाध्य. RTGS can be sent for what minimum amount? RTGS can be sent for minimum 2 lakhs rupees. Below 2 lakh rupees, NEFT is used, or by NEFT amount can be remitted. RTGS रे माध्यम रे टंका प्रेरण करिया पई अति कम रे 2 लाख टंका प्रेरण करिया को पड़ी थाए. 2 लाख रु कम पई साधारणतः NEFT यूज करा जाए. There is another type of transfer that is called IMPS, that is immediate payment system. IMPS, immediate payment system. In case of immediate payment system, the settlement takes place through NPCI, National Payment Corporation of India. It is that settlement, the settlement of IMPS is not done through RBI. It is done through NPCI. And IMPS transactions are done through mobile. IMPS रो कारबार बा सेटलमेंट
सबू एनपीसीआई बा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया माध्यम रे होई थाए। आईएमपीएस रो कारोबार साधारणतः मोबाइल फोन द्वारा होई थाए। Now coming to safe deposit lockers. Safe deposit lockers are small cubicles given on rent to banks customers. Safe deposit locker गोटे छोट छोट बाक्स जोटा कि बैंक रे गोटे बड़ अलमीरा भितर थाए छोट छोट बाक्स सेथिरे सेटा को ग्राहकों को भड़ा सूत्र रे दिया जाए। In case of safe deposit lockers, a lease agreement is entered between banker and customer. Bank gives the locker on lease to the customer. So the relationship between banker and customer is lessor and lessee. Bank is lessor, customer is lessee. सेफ डिपोजिट लॉकर क्षेत्र रे गोटिए भड़ा बा चुक्ति माने चुक्तिनामा होई थाए। भड़ा चुक्तिनामा होई थाए जोथिरे कि बैंक ग्राहकों को भड़ा सूत्र रे छोट क्यूबिकल टा देई थाए। जेहेतु भड़ा सूत्र रे देई थाए सेथि लगी बैंकर बैंक एवं ग्राहकों को मध्य रे लेसर लेसी रो संपर्क स्थापन होई थाए। भड़ा देबा रोको भड़ा नेबा वाला। Locker can be taken by 2 or more persons jointly. Locker था जणे दुई जण बा ताठो अधिक लोकों को मध्य रे भी निया जाय पारे। एक लॉकर कैन बी टेकन ऑन रेंट or lease by 1 person, 2 persons or more persons also. But nomination in case of locker can be given to maximum 2 individuals. Locker जेते लोकों को दिया ही था जॉइंटली जुग्म वहां पर जेते लोकों को दिया ही था किंतु गोटिए चाबी दिया ही था से 3 जण भितर जड़े के आसी ऑपरेट करि परिबे बा एवं अति बेसी रे 2 जण को ही मनोनीत करि हबो। जमा खाता क्षेत्र रे अति बेसी रे गोटिए जण को जड़े जदिबा जुग्म खाता अछि जदिबा जमा खाता जुग्म अछि से क्षेत्र रे भी माने 2 जण को अधिक लोक थिले भी से समस्ते जण को मनोनीत करि परिबे किंतु जते बेले जमा खाता कि लॉकर क्षेत्र रे किंतु मनोनयन करिवा पई मैक्सिमम अति बेसी रे 2 जण को मनोनीत करा जाय पारे। ए सब हला मुख्यतः এই প্রশ্ন এই 3 नंबर चैप्टर रो प्रश्न किंतु मैं आउ थरे अनुरोध करी समस्ते पूरा चैप्टर टी पढ़िबे आउ सेतर उत्तर देखिए। धन्यवाद। थैंक यू।